नमस्कार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फाइनली शराब घोटाले में ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और उनके अरेस्ट के साथ ही दिल्ली की सरकार अब कैसे चलेगी, क्या केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या केजरीवाल को अरेस्ट के साथ ही तुरंत रिजाइन करना होगा और यदि केजरीवाल रिजाइन करेंगे तो आगे क्या होगा, क्या इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिफिकेशन होंगे, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तरा बब्बर जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, दिल्ली नहीं पूरे देश में। और हम उत्तरा जी से सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किसी मुख्यमंत्री का, उत्तरा जी, अपने पद पर रहते हुए अरेस्ट होने की ये कोई पहली घटना नहीं है, तीसरी घटना है। इससे पहले भी दो मुख्यमंत्री, इनफैक्ट 3 मुख्यमंत्री इस तरह से अरेस्ट हो चुके हैं पास्ट में, चाहे फिर वो लालू प्रसाद हो, हेमंत सोरेन इनफैक्ट अरेस्ट होने से तुरंत पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब केजरीवाल का जो ये अरेस्ट का मामला है, अगर आप देखें जिन हालात में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी वजह से एक टिपिकल सिचुएशन जो है वो अब खड़ी हो गई है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिफिकेशन होंगे दिल्ली सरकार पे? So legally speaking, मेरे हिसाब से अगर मैं सिर्फ if I only look at the law, he does not need to resign necessarily in terms of the law, क्योंकि लॉ में सिर्फ एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है apart from the constitutional provisions which actually don't apply in this case. Other than that, जो disqualification का ground है in the Representation of the People Act, that is only in the case of conviction and sentencing. That means after filing of an FIR, there has been the stage of a charge sheet, charges have been framed, evidence has been led, which has been considered by the judge, और वो एविडेंस देखने के बाद जज ने कन्विक्शन भी पास किया है एंड सेंटेंस भी इशू किया है। इसके बावजूद भी सेक्शन 8 में प्रोवाइड किया गया है कि अगर स्टे हो जाता है, अगर ये कन्विक्शन के बाद भी अगर स्टे हो जाता है, कन्विक्शन एंड सेंटेंसिंग के बाद, तो स्टे का इफेक्ट होगा दैट द डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट टेक इफेक्ट। तो जब लॉ ने इतना एक बहुत एडवांस स्टेज पे डिस्क्वालिफिकेशन लाया है, सो दैट मीन्स इट कैन नॉट कम इन एट द स्टेज ऑफ अ मियर अरेस्ट at this stage, at a preliminary stage. It has to be at a fairly substantial stage, ताकि पब्लिक ऑफिशियल्स जो हो उनको हैरस ना किया जाए, उनके खिलाफ ये केसेस ज्यादा होते हैं। लॉ इज कॉग्निजेंट ऑफ दैट, which is why the law provides that this disqualification, and he would be disqualified from holding public office only अगर उनका conviction भी होता है और sentence होता है, subject of course to stay. So legally speaking, as on date, there is nothing that is holding him back from continuing to function as the chief minister of the state, because that is a democratic mandate that he holds. So legally, there is no embargo for him to continue. Practically, how he will manage to do it is a different question. He will have to take certain steps for that. बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, बिकॉज अगर आप जो कह रहे हैं उसको थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बैठती है ये बात। लेकिन मान लीजिए अगर उन्हें अब जुडिशियल कस्टडी में बाद में भेज दिया जाए, अभी रिमांड के लिए अप्लाई किया हुआ है, ईडी ने रिमांड मिलने के बाद हो सकता है उन्हें जुडिशियल कस्टडी में बाद में भेजा जाए, ऐसी सूरत में जेल से फंक्शन कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। So jail manual and rules में there is a restricted right. Rose having frequent meetings, frequent access to papers is not provided for. It is an intermittent access. I think a couple of times a week they have a way of making a list of the prisoners who can have access. But इस case में it is also possible to seek the court's permission for special privileges, because this is not an ordinary case and he is not an ordinary person. And based on different cases and different exigencies of the different scenarios,
कोर्ट में privileges के लिए apply कर सकते हैं, and that will of course be something which वो एक मतलब उनको क्या requirement है, requirement to hold meetings, access to his cabinet, his colleagues, signing of papers. He will have to make a request, and the court would have to grant him certain special privileges in law for that to work out at a practical level. So that we will have to see as it goes, based on how the court sees these and whether the court thinks कि उनको ये privileges देने चाहिए. नहीं, ये तो बिल्कुल जैसा आप बता रही हैं, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है और केस की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये मान लेना कि उन्हें परमिशन मिल जाएगी, ये अभी तो इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता. नहीं, but he can always, there is a provision, मतलब हर एक कैदी अप्लाई कर सकता है, so why not him? So there is a provision, therefore अभी it's premature to decide this way or that as to how whether he will actually be able to effectively run his government or not. In law, there is an option, there is an avenue for him to apply for special privileges. If he gets it, that's one. If he doesn't get it, there's a different angle. Therefore, today it's premature to say, but in law, there is a provision and there is a relief and there is a way out for him if he wants to have continue full-fledged and discharge all his functions in accordance with law. मैम एक चीज और यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है, ऐसी बात से खड़ा होता है कि जिस प्रकार का अभी तक हम घटनाक्रम देखते आ रहे हैं, आपने देखा होगा जिस प्रकार से लगातार समन्स जो थे उसको इग्नोर किया जाता रहा, अरेस्ट हुई, उसके बाद भी अभी तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि वो अपने पद से नहीं हटेंगे. ऐसी सूरत में अगर मान लीजिए उन्हें रिलीफ ग्रांट ना भी हो और उसके बावजूद वो रिजाइन नहीं करते हैं, तो एक डेडलॉक खड़ा हो जाएगा फिर तो, बिकॉज सरकार प्रैक्टिकली फंक्शन नहीं कर पाएगी. वो देखना होगा. It's difficult to say now. I think there are provisions in law, and if I think that there is no reason why he should not be granted those privileges, though of course it would be the discretion of the judge. Therefore, to say or to anticipate that there will be a deadlock, of course there may be. Suppose it is completely denied, there may be a situation of a deadlock, and then that will have to be dealt with as it comes. Okay. तो ऐसी सूरत में फिर केंद्र के पास क्या ऑप्शन रहेंगे, अगर ये इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए? So are you asking me whether this is a case for precedence rule? Is that your question? Because अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर पा रही है, चीफ मिनिस्टर अपने जो रेगुलर ड्यूटीज हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सूरत में क्या एलजी सेंटर का इंटरवेंशन मांग सकते हैं? मैं यही जानना चाह रहा था. मेरे व्यू में this failure of constitutional machinery has to be something much more substantial, where absolutely there has been a complete breakdown. That is my personal view, as is that this would not be in the nature of such a breakdown at this stage. I don't know how this is going to shape up. मैं आज जो है उसके बेसिस पे ही कह रही हूँ, अब कल परसों क्या होगा. But this is not the kind of scenario that is contemplated as a breakdown of a constitutional machinery. क्योंकि क्या होता है, our constitution has principles of federalism, where there is a balance between the powers of the state and the union, and that is a very, very essential part of our constitution. That's number one. A second aspect of the matter is democracy, because today the chief minister is the democratically elected head of the government. So he has the people's support. So imposing precedence rule in a way it's not in a way, it's very clearly, it subverts democracy and undermines the right of the common man. So that is not something to be taken very casually in everyday situations. It has to be something very substantial. And I don't think this is that situation which is so substantial that a government elected democratically by the people with an overwhelming support can be set aside and
governance can be taken by some other entity. And I also don't believe that this would be a situation where the balance between the state and the center can be broken down. So, matlab, on what steps the union and the LG can take, I feel this is not a case that would warrant precedence rule, imposition of precedence rule, because this is definitely not a case of failure of breakdown of the constitutional machinery. On a day-to-day basis, like I said, there are many options, and I think they can be ironed out. That is not something so big as to bring the entire constitution and the constitutional governance of the state to a halt. That is my personal view. बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक ये इसलिए इस पॉइंट पे आया था बिकॉज दिल्ली जो है उसका जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में. यहाँ आप देख सकते हैं लाइक एलजी और चीफ मिनिस्टर दोनों फीचर करते हैं पावर स्ट्रक्चर में, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा था. No, I still feel that this would not be a circumstance, and also law ने जब इतना high standard impose किया है, you see the law does not disqualify him at the stage at all. The law only disqualifies. The disqualification comes in at a much later stage. We have not even, this is not even the tip of the iceberg in that sense. There is so much before which the law declares him disqualified. So therefore to say, to automatically say that no, now therefore he doesn't exist and there is no, there's no governance, I think that would be very extreme. So I think it's very premature at this stage, and today is not the stage to make that decision anyways. हमने जैसे पास्ट में देखा लालू प्रसाद के अरेस्ट के टाइम पे भी हमने देखा जब उन्हें चारा घोटाले में अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चीफ मिनिस्टर बना दिया, उनकी वाइफ चीफ मिनिस्टर बन गई स्टेट की. तो क्या यदि केजरीवाल के सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, मान लीजिए उन्हें रिलीफ नहीं मिलती है, आगे परमिशन नहीं मिलती है जेल से अपनी ड्यूटीज को डिलीवर करने की, तो ऐसे में फिर क्योंकि एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ एक गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई है तो वो अपना एक दूसरा नेता भी चुन सकते हैं. क्या ये एक ऑप्शन भी अवेलेबल है उनके पास अभी, यदि हम प्रेसिडेंसीज भी देखें? So surely, अभी तो जैसे कि सिर्फ अरेस्ट हुआ है, he might, if suppose he doesn't get any protection from arrest as far as from courts is concerned. So now assuming he doesn't get any protection, and then assuming that he gets absolutely no permission for special privileges when he is in custody to access and to continue to work as the chief minister of the state, then of course the party can take a call as to whether it would be advisable for them to have somebody else as the chief minister of the state for the time being. That of course is a call that they would have to take. But अभी ऑप्शंस सारे खुले हुए हैं, किसी भी कंक्लूजन पे एकदम अभी नहीं पहुंचा जा सकता. नहीं, I think it's very premature and a lot can happen. So we'll have to play it by the ear. And I don't think this is at all a case of a breakdown of the constitutional machinery, which some sections of the media are making it out to be. Personally, I think that is not a situation that is contemplated in the constitution. And that does not relate to the present day scenario in Delhi. That is my view. Thank you so much for joining us. तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उत्तरा बब्बर जी जो बता रही है कि अभी भी केजरीवाल के पास बहुत सारे ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल हैं जिसके जरिए वो अपनी जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ा सकते हैं. अभी भी एक तरह से उनके लिए जो रास्ते हैं वो सारे समाप्त नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो उन्हें इस बात की इजाजत देते हैं कि वो सीएम के तौर पे फंक्शन करते रहें, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे हो पाएगा, आगे किस प्रकार की सिचुएशन उभरेगी, ये सब कुछ उसी पे निर्भर करता है. धन्यवाद.